Hi everyone, Ashish Kyal here and warm welcome. I'm going to talk about markets. I'm going to talk about how to look at failed breakout patterns, combine that along with simple Bollinger Bands in order to identify the area of reversal and how you can trade those patterns. अगर आप follow करें दोस्तों, I've been applying this technique and you can see how brilliantly this one setup has continued to work over the period of time. It has been an amazing setup and it has worked extremely well. सो पहले पहले के भी काफी सारे वीडियोस है जिसमें मैंने ये टेक्निक ये मेथड को बताया, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो डू इंश्योर यू वॉच मी वॉच माय फील्ड ब्रेकआउट टेक्निक्स combining with Bollinger Bands. It is the best way of looking at things. And this method I'm going to show you by applying it on crypto. I'm going to apply there, but these methods can be applied also on you can apply it on Nifty, Bank Nifty stocks. ये सारी जगहों पे आप अप्लाई कर सकते हो. और अगर इस टाइप के वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब द चैनल. एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वो भी देखिए. And there is a link down there if you want to learn more about it. So do ensure that you keep writing your comments down there. What else do you want to learn from these kind of videos where I've talked about even RSI, bands, simple methods that you all know but are not applying it correctly. So let me now very quickly switch to the screen and let me just share across and let me talk about how do we trade this cryptocurrency and how do we go about looking at what's happening around. If we are looking at this, and just as a disclosure and disclaimer, do ensure that crypto products are unregulated. Okay, that's risky. There is no regulatory recourse in case of any losses that you arise, so keep that in mind. Overall, ये देखते हैं हम यहाँ पर एक सिंपल सा क्लासिक सेटअप. क्या सेटअप है? पहली चीज ये है बॉलिंगर बेंड्स जो फ्लैट हो चुका है, मतलब ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम चार्ट है दोस्तों. दी बेंड्स आर फ्लैट, दैट इज व्हाट यू कैन क्लियरली सी. एंड ओवरऑल इफ यू आर सीइंग दिस, you can clearly make out that the overall trend that you are seeing here has been reversed from the lower band back on the upside. Also यहां पर इसने एक ब्रेक दिया था which is a false break below the band also and below the prior low also. So there are two breaks that we can clearly see. एक तो इसके नीचे गया पहला, दूसरा यहां पर भी. एंड ये करने के बाद प्राइस रिवर्स्ड बैक on the upside. There was a superb move on the upside. It came and retraced it, and now it's again resuming the trend, possibly towards the lifetime high levels, which is 1,11,246 US dollar. That's what I'm looking at the daily time frame chart. If I look at the Ethereum. So if you look at Ethereum, similar kind of a method, if we are applying on Ethereum, Ethereum is more volatile, more fast compared to Bitcoin. If you look at Ethereum, it's more fast, more volatile compared to Bitcoin. Very similarly, यहाँ पर ट्रेंड आया था दोस्तों. दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम चार्ट. द ट्रेंड केम फॉर अराउंड 4-5 days and it has now consolidated for such a long period of time. मतलब आप देखोगे करीबन नियरली अराउंड 20-22 days हो चुका है when the crypto is moving in just a broad range. Again, that you have to remember and understand very, very clearly, the technique that I am talking about is of failed breakout. What is that failed breakout technique? If you look at it, these were the lows that was formed and this candle broke below that low. However, price is reversed back above this level. And now if it manages to break it, there is going to be a very sharp possibility of an upside reversal that can come over here. To understand this more clearly, we will go on a hourly time frame chart. So यहाँ पर if I am from daily से view मिल गया, execution hourly पे हमें करना होगा. If I look at it, we are currently at this level. So we can clearly see there has been a very, very narrow range bound movement that has been going on in Ethereum for quite some time. And we can clearly see that happening. This was the crash where on the daily chart, it looks like a crash on hourly. लेकिन डेली चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो वहां पर प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे गया
ट्रैप किया। इसको मैं अगर और जूम करूं, ये देखिए ये लो था, इधर लो गया, ट्रैप किया, और अब हम फिर से ब्रेक करके ऊपर जा रहे हैं। अगर यहां पर ओवरऑल ट्रेंड लुक्स टू हैव टर्न्ड अप ऑल्सो ओवर हियर, नॉट ओनली दैट कैंडल, आवरली चार्ट पे वापस सिमिलर काइंड ऑफ अ सेटअप किया है इसने। इट ट्रैप्ड पीपल ओवर हियर, a failed breakout, and reverse back on the upside. So I think these kind of failed patterns work much better than a successful pattern. So यहाँ पर looks like Ethereum is headed again towards our short term, towards the level of around 2640 level, which is the previous hurdle, previous resistance, वहां तक जा सकता है। नीचे का जो सपोर्ट लेवल है दैट कम्स टू अराउंड 2470, दैट्स द सपोर्ट आई एम लुकिंग एट, एंड दिस विल बी वैलिड unless we move back below this. I think the overall trend is going to be on the upside for this cryptocurrency again. Bitcoin and Ethereum has a very interesting relationship. If you check, Bitcoin usually moves Bitcoin usually doesn't move very much. Ethereum is a very well high beta thing, because if Bitcoin moves up, see, if Bitcoin is moving up sharply, Ethereum tends to catch up with Bitcoin later on, maybe in a lagging fashion, and then it starts catching up. So यहाँ पर और ट्रेड कैसे करना है on this platform, I'll just show you. Over here, if I'm bullish, I can simply go and I can click on best bid. I can put how many lots do I want to buy. I can buy 2 Ethereum. 2 Ethereum के लिए it tells me how much is the fund requirement that I have is 25.35 US डॉलर चाहिए खाली मुझे। सोचिए 2 Ethereum, इसकी नोशनल वैल्यू मैं आपको बताऊंगा, यू विल बी शॉक टू सी व्हाट इज द नोशनल वैल्यू। ओके, यहां पर अगर आप देखोगे, सो द नोशनल इज 5069 US डॉलर का वर्थ इथेरियम हम खरीद रहे हैं। कितना पैसा दे रहे हैं हम? ओनली 25.34। द लिवरेज इज टू द एक्सटेंट ऑफ 200x। इमेजिन नाउ, क्या इतना लिवरेज अच्छा है? इट डिपेंड्स। If you know not only your risk management, but if you also know your money management, that is very, very crucial, because you cannot just leverage just because you have that availability कि भाई कितना भी कर लो, नहीं चलेगा। आपको अपना मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मूवमेंट क्रिप्टो में बहुत शार्प और फास्ट आता है। एंड देन यू कैन सिंपली क्लिक ऑन प्ले ऑर्डर एंड द ऑर्डर्स गेट सबमिटेड हियर। यू कैन सी दैट इट इज दैट सिंपल। वंस यू एग्जीक्यूट इट, एक बार एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद में यू कैन सिंपली प्लेस अ स्टॉप लॉस। सो लेट मी जस्ट एग्जीक्यूट इट फॉर यू एंड देन प्लेस अ स्टॉप लॉस। सो हमने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है हमारा 2 इथेरियम का 2534.85। By the time I was explaining you, the price already went up. So यहां पर अगर मैं चेंज कर देता हूं 253, अभी फिलहाल चल रहा है 36। Okay, and I'll just change that. It will get executed. So the order is successfully updated. देखिए, by the time I'm punching the order, this is how fast cryptocurrencies move. By the time I'm punching, it's changing. That's how fast it moves. See, now it got executed in just, so that's the movement that you can clearly see. So once you have that movement, you can see here, I'm already losing $6. That can change very fast, as I said. And यहाँ पर कैसे है? You can still place a trailing stop loss method very, very simply. समझो मुझे देखना ही नहीं है मार्केट, सो सिंपली आई कैन जस्ट गो हियर, प्लेस अ स्टॉप लॉस 120 US डॉलर से ट्रेल होता है, आई कैन जस्ट सिंपली डू दैट। सो इट विल प्लेस अ स्टॉप लॉस ऑल्सो अराउंड दैट $120। आई एम नॉट सेइंग you place that $120 of US dollar stop loss. I'm just explaining you how it works, how easy it is on the platform if you want to, if you are trading and if you are looking at it. And the movement can be very fast, very sharp, very quick. And you can also see the risk that is associated in terms of how much margin that you paid, how much can you lose. All of those things is what you can clearly make out from here. And that's how the PNL can be very, very quick. If you make, you can make very fast. If you lose, you will lose equally fast. That's how it is. So the aim क्या है यहाँ पर? क्यों लग रहा है हमें कि यहाँ से ओवरऑल जो ट्रेंड है पॉजिटिव होना चाहिए? सी, इफ आई एम लुकिंग एट दिस चार्ट,
आई सी फेल्ड ब्रेकआउट, एज आई सेड फेल्ड ब्रेकआउट। यहां पर बहुत बार स्पाइक दिया था, क्लोज नहीं किया, तो ट्रेंड पॉजिटिव था। इसने, इस कैंडल ने यहां पर क्लोज दे दिया, मतलब बेरिश है, ब्रेकडाउन बेरिश है, लेकिन फिर रिवर्स हो गया। मतलब जिन्होंने यहां बाय किया, दे विल नाउ स्टार्ट कवरिंग देयर पोजीशन एंड दे विल बी very very fast to cover their position, so that is going to result into an opposite side move which can be very quick, very fast, and that's how you have to look at things. And do not work without stop loss. अगर आपको काम करना है क्रिप्टो में, स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना है, वो मान के चलना। यू कैन ऑल्सो डू स्कैल्पिंग काइंड ऑफ ट्रेड्स, कैन बी वेरी फास्ट, एंड ये ट्रेल स्टॉप लॉस अगर डाल दिया, you don't really have to bother much. Now, how much are you going to lose? You can simply see here, and you can uh, trade accordingly. So that's how crypto functions. I thought I'll just make you understand this quickly in a very quick short video जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, and I'm sure you are enjoying this kind of small short videos where I'm applying these techniques, showing you how a trading screen looks like and how easy it can be at times when you are looking at things. So ये सारी चीजें हैं दोस्तों। डू इंश्योर एंड डू कीप अ वॉच ऑन बिटकॉइन। बिटकॉइन ट्रेड कर रहे जरूरी नहीं है, लेकिन वॉच रखो। अगर बिटकॉइन जा रहा है, बिटकॉइन में ब्रेकआउट आ रहा है, एंड दैट्स गोइंग टू हैपन, देयर इज अ चांस बिकॉज कोरिलेशन इज हाई, इथेरियम माइट कैच अप बट इन अ लैगिंग फैशन। सो वो ध्यान आपको डेफिनेटली रखना है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू लुक एट इट। Awesome guys, so ये था एक quick short update video, how to execute trades, how to look at simple techniques of a failed breakout and trade that. If you are liking it, if you are, ये अगर आपको पसंद आ रहा है, so do ensure that you are putting down in your comment section whether you're liking it or not. Also the link is down there. Do experiment and do check how it goes for me. आज के लिए इतना ही दोस्तों, एंड मिलेंगे जल्द। हैव अ वंडरफुल टाइम। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ।